Hello dear students, in this video we are going to do chapter number 3 trigonometric 2 part 2 exercise 3.2. In previous video we did exercise 3.2 3.1 we have completed in the previous video. Now let's do this exercise, that is 3.2 of trigonometry part 2. इसमें we are doing this exercise by using allied angles. So what are the allied angles? So let's see definition of allied angles. So what are the allied angles? See here, allied angles are, how we define allied angles. Allied angles means, see, theta is a given angle. Okay, see here, pi by 2 plus theta या minus theta. Look at this example. Theta is a given angle, pi by 2 plus or minus theta. Now if we find difference of these two angles, theta and pi by 2 plus theta, you are getting this difference is equal to plus or minus pi by 2. Okay, now look at this another angle, that is pi plus or minus theta. If we find difference of these two angles, then again you are getting it as plus or minus pi. That means sum or difference, अगर if you find pi by 2 minus theta and theta, see here pi by 2 minus theta and this theta angle, इसका दोनों का addition, that is sum of these two angles, so it gives us what? Pi by 2. So sum or difference of the angles is either 0 or it is integral multiple of pi by 2, or it is integral multiple of pi by 2 where n is integer. So or it is integral multiple of pi by 2, then the angles are said to be allied angles. So how we define allied angles? So allied angles means what? If sum or difference of the angles is either 0 or it is integral multiple of pi by 2, or it is what? Integral multiple of pi by 2, then the angles are said to be allied angles. So if theta is an angle, then its allied angles are plus or minus theta, pi by 2 plus or minus theta, pi plus or minus theta. See, its allied angles are what? If theta is a given angle, then its allied angles are here. If theta is given angle, then its allied angles are plus or minus theta, pi by 2 plus or minus theta, pi plus or minus theta, 3 pi by 2 plus or minus theta, so and etc. So it has infinite number of allied angles. So here you will observe that sum or difference of the angles is what? Either 0 or it is integral multiple of pi by 2. So such angles are said to be allied angles. Now trigonometric functions of allied angles. So you know sine of pi by 2 minus theta, that is equal to what? Cos of theta. Now we'll see sine of pi by 2 plus theta. So we can prove it is equal to what? Cos theta. Sine, see, if this angle is n pi by 2 plus theta, n pi by 2 plus theta, or n pi by 2 minus theta, where this n is odd, where n is what? Odd integer. अगर ये n odd है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, n इज इक्वल टू 1 मतलब ऑड है, तो साइन इज चेंजिंग टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन, टैन विल चेंज टू कॉस. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज लाइक दिस, साइन विल चेंज टू कॉस एंड कॉस विल चेंज टू साइन. अगर ये n ऑड है तो दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? कॉस थीटा. कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, हियर cos of
pi/2 plus theta, that is equal to what, sin theta. But this pi/2 plus theta, it is in what, सेकेंड क्वाड्रेंट. ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और cos नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सो हम नेगेटिव साइन लेंगे. So keep in mind, when this n is odd integer, then n pi/2 plus or minus theta, sin will change to cos, cos will change to sin, tan will change to cot, and cot will change to tan. Sec and cosec also will change, vice versa. Now अगर ये n even है, फॉर एग्जाम्पल cos ऑफ पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 2. सी हियर n pi/2 प्लस और माइनस थीटा. यहाँ पे जो n है, n इज इक्वल टू 2 है. सी हियर n इज इक्वल टू 2. So 2 times of pi/2, that is only pi. तो ये even है. So if it is even, then cos will not change to sin. cos तो यहाँ पे भी cos थीटा ही रहेगा. And ये sin जो है, it is depending on the quadrant in which this angle lies. For example, pi plus theta लेते हैं हम. Pi plus theta is in which quadrant? It is in third quadrant. So in third quadrant cos is negative, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन देंगे. और as earlier we said here, n is even, मतलब ये क्या है, 2 pi/2. actually it is what, cos of, see here, cos of 2 times of pi/2 plus theta. तो as this is even, so cos और sin will not change. यहाँ पे हम cos ही लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे. और pi प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है. सिमिलरली साइन, फॉर एग्जांपल सी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा. अगेन दिस n pi/2, यहाँ पे n जो है n even है. यहाँ पे देखो n even है, 2 times of pi/2, then it will not change. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, तो राइट हैंड साइड आल्सो विल साइन थीटा होगा. पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. 2 pi, सी हियर, cos of 2 pi प्लस और माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा. अगर 2 पाई के साथ है या 2 टाइम्स ऑफ n pi/2, यहाँ पे देखो cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n पाई प्लस और माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा. दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा. Similarly sin of 2 times of n pi plus or minus theta, that will be equal to sin of plus or minus theta. तो ये को टर्मिनल एंगल्स होते हैं, थीटा और 2n पाई प्लस थीटा, थीटा और 2n पाई माइनस थीटा. So these are what, co-terminal angles. So as these are co-terminal angles, so their trigonometric functions are same. Sin और cos same है, तो tan और cot भी same रहेंगे. So let's do question on this exercise, that is exercise 3.2. So 3.2 is on allied angles. So फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 690 डिग्री. साइन ऑफ, लिसन हियर, साइन ऑफ 690 डिग्री. 690 डिग्री, तो 690 डिग्री हम एक्सप्रेस करेंगे 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस
330 डिग्री, या तो आप ऐसे एक्सप्रेस करो या वी कैन एक्सप्रेस इट एज 720 माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज 2 पाई. 360 मतलब क्या होता है 2 पाई. 360 मतलब 2 पाई प्लस थीटा. सो ये को टर्मिनल एंगल्स है, सो इसलिए इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी सेम. सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 330 डिग्री होगा. अभी दिस 330 डिग्री विल राइट एज साइन ऑफ, देखो 270 प्लस हाउ मच 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री. 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री. Now look at this. Here see 0, this is 90 डिग्री, यहाँ पे आता है 180 डिग्री और यहाँ पे आता है 270 डिग्री. Now 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ये मतलब क्या है, इट इज 3 इंटू 90 डिग्री, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. सो देन जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है तो साइन विल चेंज टू कॉस और कॉस विल चेंज टू साइन. कीप इन माइंड दिस इज साइन ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री. हाँ, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन विल चेंज टू कॉस. इट इज कॉस ऑफ 60 डिग्री. ओके, एंड दिस इज इन व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन रखेंगे. व्हाट इज कॉस ऑफ 60 डिग्री? कॉस ऑफ 60 डिग्री इज 1/2. सो आवर आंसर इज 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 495 degree. Now 495 degree, how we will find 495 degree? Sine of 495 degree, 495 degree we can express as 360 डिग्री प्लस, ओके 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री. अभी अलाइड एंगल्स है, सॉरी दिस आर व्हाट को टर्मिनल एंगल्स है. 360, ओके वन कंप्लीट रोटेशन होता है 360 और प्लस 135 डिग्री. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी सेम. दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 135 डिग्री. 135 degree. Now this 135 degree we will write as sine of 90 degree plus 45 degree. 90 degree plus 45 degree. अभी with odd multiple of pi by 2. Okay, trigonometric functions are going to change. Sine है तो cos होगा, cos of 45 degree. Cos of 45 degree. Now this angle is in सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. सो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट इज पॉजिटिव साइन. सो इट इज 1/√2. cos ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2. यस, डन. सो दिस इज इक्वल टू 1/√2. ओके, इट इज 1/√2. देन नेक्स्ट इज sine cos of 135 degree. So it is 135 degree, cos of 135 degree. Now let's do this cos of 135 degree, sorry 315 degree. Cos of 315 degree. Now this is equal to cos of 270 degree plus 270 degree plus here 45 degree. Okay, 45 degree.
then here this 270 means what? Odd multiple of 90 degree. Okay, will odd multiple of 90 degree, that is cos of 3 into 90 degree. ये odd multiple है, therefore cos will change to sin और sin will change to cos. Therefore cos will change to what? Sin. Sin of 45 degree लिखना है हमें इधर cos of sin. Cos will change to what? Sin. So sin of 45 लिखना है और this angle lies in what? Fourth quadrant. Okay, it is lying in fourth quadrant. 270 plus 45 मतलब fourth quadrant. So in fourth quadrant cos is positive. Okay, in fourth quadrant cos is positive, so positive sign, so it will be 1 upon root 2. So our answer is 1 upon root 2. Then we will do this tan of 225 degree. So let's do this tan of 225 degree. Here tan of 225 degree into 225 degree we express as, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 180 plus 45 degree. Now 180 is now we can express is as 2 times of 90 degree. 2 times of 90 degree. अगर even multiple of 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो यहाँ पे tan है तो tan ही रखना है हमको हमें और ये 45 डिग्री होगा. नाउ दिस इज इन विच क्वाड्रेंट? ओके, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो इट विल कैरी पॉजिटिव साइन और tan ऑफ 45 डिग्री इज व्हाट? 1. सो आवर आंसर इज व्हाट? 1. Therefore tan of 225 degree is equal to what? 1. Done. Next is tan of minus 690 degree will do. Okay, tan of, see here the question number is 6. Question number is 6. Tan of minus 690 degree. Now tan of minus theta, remember this tan of minus theta is minus tan theta. Remember this tan of minus theta is what? Minus tan theta. ये odd function होता है. Cot of minus theta is also minus cot theta. But cos of minus theta is cos theta, that is even function. So sin of minus theta is minus sin theta. Tan of minus theta is minus tan theta. So it is minus of tan of 690 degree. अब ये 690 degree we will express as, see here minus sign as it is, tan of 690 will write as 360 degree plus 330 degree. या तो आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 720 माइनस 30 डिग्री, 720 माइनस 30 डिग्री या 360 प्लस 330 डिग्री. सो इट इज, सी दीज आर को टर्मिनल एंगल्स. 360 प्लस थीटा है ना, सो इट इज को टर्मिनल एंगल्स. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम. मतलब यहाँ पे हम विल स्किप दिस 360 degree and we will write it as 330 degree only. Again minus tan of 330 degree we will write as 270 plus 60 degree. Then here minus tan of, see here 270 is what? 3 times 90 degree plus 60 degree. Whenever it is odd multiple of 90, tan will change to what? Cot. यहाँ पे odd multiple of 90 है तो tan will change to cot. Here it will be changed to cot. Cot of 60 degree होगा और
270 plus 60, 270 plus theta, it is in fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. सो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. सो ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, सो इट बिकम्स अ पॉजिटिव साइन. इट इज प्लस cot of 60 degree, and cot of 60 degree is equal to 1 upon root 3. So we should get the answer 1 upon root 3. Then let's do this sec of 855 degree. Sec of 855 degree. Here we will do, it is sec of, see this is a question number 8, sec of minus 855 degree. It is minus 855 degree. Remember this sec and cos, these are even function. So cos of minus theta is equal to cos theta. Sec of minus theta is equal to plus sec theta. Plus sec theta. So these are said to be even function. So cos of minus theta is plus cos theta, sec of minus theta is sec theta. So clearly this will be equal to what? Only sec of 855 degree. 855 degree. Now we will express it as sec of, see here, 720 degree plus, okay, 720 degree plus 135 degree plus what? 135 degree. So it will be 855 degree. Now 720 degree means what? 2 times of 360 degree. It is 2 times of what? 360 degree. That is 720 degree. So as earlier we said here, 2n pi plus theta. See here, trigonometric function 2n pi plus theta or minus theta. So that is equal to what? See, 2n pi plus or minus theta. So trigonometric functions will be same. This is our allied angle. So here this is what? 2 times of 360 degree. So it is sec of 135 degree only. Now sec of 135 degree will express as 90 plus 45 degree, and with 90 plus 45 degree sec will change to cosec. It will change to what? Cosec of 45 degree, or 90 plus 40 is second quadrant. It is in second quadrant. In second quadrant, sine and cosec are only positive. Rest of the trigonometric functions are negative. So clearly the sec will be negative. तो इसका साइन हमें नेगेटिव करना है. Which is, what is sec of 45 degree? It is root 2. So cosec of 45 degree is root 2. So it will be minus root 2. It will be what? Minus root 2. Then we will do 9th question. So let's do 9th question. Here cosec of 780 degree we have to find. Cosec of 780 degree. We will find cosec of 780 degree. How we express this 780 degree? It is cosec of 720 plus how much? See, easily you can express it, 60 degree, and here 720 degree. So it is what? Co-terminal angles में आता है. It is cosec of 60 degree only. And what is this cosec of 60 degree? It is 2. Cosec of 60 degree is
2 by root 3. Yes, so answer is this, cosec of 780 degree, that is equal to 2 upon root 3. 2 upon what? Root 3. This is the answer. Next is cot of minus 1110 degree. So we'll do cot of, so this is a question number 10. What is this question number 10? Cot of minus 1110 degree. Here tan and cot are odd function, that is cot of minus theta is equal to what? Minus cot theta. It is equal to minus cot theta. So cot of this will be equal to minus cot of 1110 degree. Look at this angle 1080 degree. See, it is 1080 degree. So this angle is equal to what? 3 into 360 degree. 3 into what? 360 degree. So 1080 is what? 3 into 360 degree. So we can express this angle. इस angle को हम express करेंगे as minus cot of, see here, 1080 degree plus 30 degree, plus what? 30 degree. So it is 1080 plus 30 is 1110 degree. So it is equal to, now ये एंगल और ये एंगल को टर्मिनल एंगल्स है. So this is equal to minus cot of, see we can write it as 3 into 360 degree plus 30 degree. Therefore it is minus cot of 30 degree, and cot of 30 degree is equal to root 3. Is equal to what? Root 3. So it is minus, see, cot of 30 degree is root 3, and this minus sign will carry, so it is minus root 3. So yes, cot of minus 1110 degree is equal to what? Minus root 3. Now let's do question number 2. Prove that this following. So we'll prove this. First sub question is cos of pi plus x into cos of minus x, sin of pi minus x into cos of pi by 2 plus x is equal to cot square x. So very simple question it is. Here we attend this question number 2. Sub question number 1. Okay, it is cos of pi plus x, cos of pi plus x into cos of minus x upon sin of pi minus x into sin cos of pi by 2 plus x, pi by 2 plus x. So we want to prove it is equal to what? Cot square x. So first of all, cos of pi plus x is how much? See here, cos of pi plus x. Okay, pi plus x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, एंड pi plus x we can express as 2 times of pi by 2 plus x. Okay, ये this 2 is what? even. So even multiple of pi by 2. So trigonometric function does not change. तो यहाँ पे cos ही रहेगा.
so minus cos x. Hereafter you keep in mind cos of pi plus x is minus cos x, or cos of pi minus x is also minus cos x. Okay, then next is cos of minus x. Even function है, cosine function is even function. Cos of minus theta is cos theta होता है. Sin of pi minus x is equal to pi minus x is in second quadrant. Second quadrant में साइन पॉजिटिव होता है, और pi means what, 2 times of pi by 2 और even multiple of pi by 2 है, तो trigonometric function does not change. तो यहाँ पे रहेगा sin x. Keep in mind sin of pi minus x is equal to sin x. फिर cos of pi by 2 plus x, सारे वैल्यूज अगर हम okay, if we find it and we substitute, easily you can get the right hand side. Here cos of pi by 2 plus x, pi by 2 के साथ क्या होता है, चेंज होता है. लेफ्ट हैंड साइड में cos है तो राइट हैंड साइड में आएगा sin. बट pi by 2 plus x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन विल चेंज. cos will see cos in second quadrant is negative, so it is negative sign. So all these values you substitute here in the LHS. So LHS is equal to, see here in place of cos pi plus x क्या रखेंगे हम, minus cos x. Cos of minus x is cos x. Sin of pi minus x is what, sin x. And sin of pi by 2 plus x, sorry, cos of pi by 2 plus x is what, minus sin x. So it is minus sin x. So here this negative sign और ये negative sign, that will get cancelled, and it is equal to ये negative sign और ये negative sign will get cancelled, and it is cos square x upon sin square x, which is equal to cot square x, and that is RHS. Yes, that is what, RHS. We'll do now sub question number 2. Sub question number 2 is what, cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x and whole into bracket cot of, see this is what, multiplication, cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x, and this we want to show it is equal to 1. So here we do sub question number 2. Sub question number 2, 3 pi by 2 plus x, cos of 3 pi by 2 plus x. So 3 pi by 2 means, see here, odd multiple of pi by 2 रहा तो cos will change to sin, so that is going to change, that is sin x. और 3 pi by 2 plus x मतलब which quadrant, fourth quadrant. See it is in fourth quadrant. Here यहाँ तक 3 pi by 2 होता है, 0 pi by 2, 2 pi by 2 और 3 pi by 2 and plus x. So okay, it is in which quadrant, fourth quadrant. Yes, this is in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. ओके, cos विल चेंज टू sin and this cos is positive in the fourth quadrant. Next is cos of 2 pi plus x. Cos of 2 pi plus x.
2 pi plus x or 2 pi minus x, that is equal to what? Cos x only, that is equal to cos x. फिर then cot of 3 pi by 2 plus minus x, cot of 3 pi by 2 minus x. So again ये 3 पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो कॉट विल चेंज टू tan, और द एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट एंड tan नेगेटिव होते हैं, सो विल पुट हियर नेगेटिव साइन. 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब यहाँ पे रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan एंड कॉट. So we are getting here plus cot x. Then cot of 2 pi plus x. What? Cot of 2 pi plus x. 2 pi plus x मतलब first quadrant. So that is equal to what? Cot x only. Yes, after getting all these values, LHS में हम ये substitute करेंगे. Will substitute it in LHS. So what's our LHS? Here LHS is equal to, first is what? Cos of 3 pi by 2 plus x. What is that? Cos of 3 pi by 2 plus x, sin x. Then into what? Cos of 2 pi plus x. 2 pi plus x, cos of 2 pi plus x, that is equal to what? Cos x into cos x. Okay, into cos x. Then in bracket we have cot of 3 pi by 2 minus x. So what is that? Cot of 3 pi by 2 minus x, that is equal to what? Tan x. It is tan x, and plus cot of 2 pi plus x, that is equal to what? Cot x. Cot x. So हमें ये ब्रैकेट टर्म जो है we have to simplify. Sin x into cos x into inside the bracket this tan x will write sin upon cos, sin x upon cos x, sin x upon cos x plus cos x upon sin x. After this LCM of the denominator will be what? Sin x into cos x. Here LCM of the denominator is cos x into sin x, and cross multiplication will give us sin square x. Sin square x plus this cross multiplication will be cos square x, which is 1. Sin square plus cos square will give us 1, but this sin x cos x and this sin x cos x is getting cancelled, and this sin square x plus cos square x, it gives us what? 1. So we required 1 in the right hand side. See, we required what? 1 in the right hand side. So therefore this is equal to what? RHS. Yes. Now we'll do question number, see, question number 3, sub question number 3, 4, 5 and 6 in the next video. Thank you for watching this video.